This is a series by Academic Vacation. It is an MSME registered organization, and we'll be learning NCERT 11th and 12th, all right, during the weekends. And okay, so before I begin, I've not introduced myself to anybody yet. So I would like to do that first of all. Okay, so this is me, Vaishali. I am Vaishali, and I am an NLP practitioner and master coach. I am also a graphologist, a handwriting analyst. I am also a motivational speaker and a life coach. And I have a background in psychology. I have won various awards on national and international level in literature. So I am a writer also. I have been awarded by Deputy Commissioner, Police Commissioner, and Mayor of the city that I reside in for my various achievements. And I've also been featured in the newspaper like more than 2 dozen times. And I'll be showing you the feedbacks of my previous sessions in the coming slides. So just for 5 minutes, you may get bored because I'm introducing myself. After that, we are going to have a lot of conversation. So yes, my some of my articles have been published in magazines, and one of my article was also selected for publication in a book with ISBN code. And I have been volunteering with various NGOs and mental health organizations lately. Okay, so these are some of the feedbacks from my previous workshops that I've taken in literature, in gratitude, and many more. Okay, so without making you feel bored, okay, I'll introduce you to what are the rules for attending a session with me. It can be a little different because you can't keep quiet. Rather than the way you attend your general sessions, or maybe in your classroom. So this is not a classroom environment. This is a completely highly interactive environment where I want each one of you to participate. So we are just 7 or 8 of us. So you cannot keep quiet. You have to interact, you have to participate, and that is how you have to learn. And you must keep a paper and pen handy. I had mentioned in the instructions itself. And you have to be very active. And I request you to now that we have experienced lockdown so much, and we all of us must have attended so many sessions online, right? I hope everybody is good with English as well as Hindi. Are you? Yes, ma'am. Yes or no? You can type it in the chat box, or you can unmute yourself, right? So what do? We switch our apps. If we are using a phone, अगर आप लैपटॉप पे भी यूज कर रहे हो, तो you may कि एक हाथ से फोन चला लूं और दूसरे हाथ से I do the other thing. So I don't want you to do that. अगर हम सब लोग if we have got this opportunity to interact and learn, so why not make the best out of it? So to be productive, let us not multitask for this 1.5 hour, which we are spending at the end of every week for ourselves. Okay. I know most of us have this habit कि कोई Zoom पे session चल रहा है तो Zoom allows us to switch the app और हम एक ऐप से सीधा WhatsApp पे क्या notification आ रही है, Facebook पे क्या है. So I don't want you to do that. Let us just सिर्फ 1 घंटा अपने दिन का, if we give it nicely, it is productive. Otherwise session attend किया और उसका 10% आप घर लेके गए, it is of no use, right? It's of no use for you, neither it is of any use to me. So to avoid that, you can keep your videos on, ताकि आपको होगा कि हाँ, I am being observed, so I cannot switch my app and go to the other app, right? That is the purpose of keeping your videos on. And I hope you have a very great learning experience with me and with your fellow friends. Not all of you introduced yourself in the group, but I had a conversation with few of you. Some of you are preparing for MPhil, some of you are preparing for UGC NET, and I guess we also have some students in NCERT for CBSE 12th who are preparing for their board exams. So my approach would be to clarify your concept, right? And I will be I'll take a separate session for the board students or the university students who want कि हम exam में paper कैसे attempt करें. I have myself been a topper, so I can guide you with that thing. And we'll also obviously be doing a number of MCQs and all that. We'll be learning bit by bit every day in the WhatsApp group. And yeah, that's how it is going to be. So you all can tell me probably in the chat box that what are you preparing for? Are you preparing for NET or +2? Like today, the students who are present in the class,
Can you please type that in the chat box? I'm awaiting your responses. Sorry, I got disconnected. Am I audible and visible now? Okay. Shweta is preparing for master's entrance. Arjun is doing his bachelor's and he has psychology as a subject. I got disconnected. I think I did not get replies from others. If you can please type once again, or you can unmute yourself and tell me. Kangan is in class 12 and Pooja is also preparing for master's entrance. Anyone else? We have 7 students, I guess. Simi is preparing for NET. Simi, have you done your master's or are you still doing your master's? Okay, you're pursuing your master's. All right. So these were some of the rules. And okay, second year. Okay, so why NCRT? Before we actually begin, it's important to have this 10 or 15 minutes of conversation. That, why have we gathered here? Like, what are we preparing for? What is our goal in our mind? And why do we actually have to study NCRT? Like, those who are giving their 12th exam, probably it isn't necessary for them, but NCRT is not restricted just to your 12th के board के exams या फिर आपकी सिर्फ master's entrance or something. NCRT is something which you can see कि whether you're preparing for MPhil or you're preparing for UGC NET or you're preparing for any competitive exam, NCRT is something which is like the foundation of all. Okay, so it's not just ki people are like we have done our bachelor's. Why do we need to study NCRT? Or I have already done my master's. I'm doing my master's. Why NCRT? Because it is one such little book which covers everything in like 100 pages. And there is so much to cover. Like the quiz that you gave yesterday, you must have seen that not all of us could attempt all the answers, right? We found it on the moderate or the hard level. Nobody found it easy. I think there was only one person maybe who said it was easy. So NCRT carries a lot within itself which we don't know. So it's important that we clarify our basics. We have a strong foundation on which we can build up later on by reading Cicerelli or Baron or any other book, right? So I think that is why NCRT is essential. I'm so sorry about my network. Okay. Did you hear what I just said? Okay. Today we are going to study about life challenges, meaning life challenges, and this is chapter 3 of our NCRT 12th grade. So I want each one of you to unmute yourself and tell me what kind of challenges do we face in our daily life. So now let us get into the unmute mode. Kangan, what kind of life challenges do you think we face in our life or people face in their life? You have to unmute yourself and respond. Are you talking in terms of mental health or something like the mental challenges that we face? Sorry. Sorry, you're not audible to me. I'm so sorry. My internet connection is highly unstable. Wait a minute. I'll, just change my connection. Maybe that will help. I'm so sorry. Just a minute.
All right. Uh, Are you able to hear me now? Is it clear? The voice is not clear actually. It's still breaking? Yeah. Um, it's not breaking from like I'm able to hear you clearly. Maybe like there's a internet issue from the other person's side. Now it's okay. Now I can hear you, whatever she's saying. Okay. Can you guys hear me now? Yeah, it's okay now. Yeah. Perfect. Okay, I've changed my connection. I hope it does not get disturbed again. I'm so sorry. Okay. So yeah, we want to know what are the life challenges that we face in our daily life. Like we often feel very low about ourselves. Like if we are doing something and if we are not able to achieve it in the right time, so we feel low. And like if there is something new that we want to enter it, like some people are excited about it, but the kind of life challenges that I face every day is like I'm kind of excited but kind of nervous to enter a new thing, to enter a new situation. So I think that's Right. the life challenge that I face every day. It's not just you, it's all of us. We feel anxious, absolutely. Yeah. Okay. What about Shweta? Shweta, what kind of challenges do you face in your life? Shweta, would you like to talk with us? Have a conversation? Okay. Pooja, what about you? Okay. So for me, it's health issues because these are the Mhm. major challenges that I face in my life, like almost every day. So, like, I have a very bad physical health, but then I think I'm strong mentally. So I think that keeps me stable and keeps on, or like I keep on moving in my life, even though I have some health issues. So health is my major issue in my life. Rest, everything Okay. is fine. Like rest, I'm very much satisfied with everything that is going on in my life because I see that Mhm. even though there are problems, but then I take them as a challenge. I don't get disappointed with them because I know that these are the problems which will help me grow in some or the other way. Right, that's very true. What about Arjun? Yeah, so I'm also quite satisfied with everything that's going on in my life. I've chosen a subject which I really love, and in everyday life, I think my main concern is getting things right with my parents at the moment, because to be honest, I don't I don't really feel much close, you can say much close to my parents at the moment. It's not like I'm fighting with them or there's something wrong in the family. It's just when you don't feel that close to your parents, it's really sometimes um weird to live in their house, because they are paying for all my fees and stuff. And right now it's my only main concern to get things right with my parents, that's it. Right. Okay. So all of us, we have our challenges. And I think that the major challenge that, the way I can generalize it to all is when things don't go our way. जब चीजें हमारे तरीके से नहीं चलती हैं, we find it challenging. We find that it's stressful. We have a stimulus and there is something that we don't like and it worries us, isn't it? Stress is the life challenge that all of us face. There are things that don't work according to us, and we feel that we are helpless in that context, isn't it? Yes, Yeah. ma'am. Okay, so you guys agree with me. Okay, so this is our agenda of the week. Please excuse the background noise. This is usually the state here in the evening. This is stressful for me. This is the challenge that I face, that I want to teach you all, right? In the best of the environment, but there are background noises. Okay. I hope you can understand my situation too. Okay, so this is the agenda of our week. We are going to learn meeting life challenges.
We will be covering, I think, half of the chapter today, and half of it will be covering in the coming days. And I need your active participation for the same similarly. Okay, what according to you is stress? So you guys have to tell me in your own terms, what do you think is stress? Arjun, what is stress according to you? The situation which you put in front of us was stressful. Now, how can you know, derive to the definition of stress with the same? I don't know. Stress is something which which drive you nuts. Actually, Okay, all right. It's not a very good definition from examination point of view, but yes, okay. Yeah. Kangan, what about you? Stress is something which actually doesn't make us feel comfortable, which actually doesn't make our mind feel comfortable. Like we always want to be out of it. Okay, that's also true. What about okay, Shweta, what about you? What do you think stress is? Shweta, can you unmute yourself now? Or you can probably type it in the chat box, no problem. And what about Pooja? Pooja, what is stress according to you? When there is a lack of harmony in our life, like when there is no balance between the situations we experience. Right. So that is stress. That's it. That's pretty much correct. So, like all of you described, right? Ki this is the situation that drives you nuts, or you know that you don't find good. So, what is that situation? There is actually something in the environment or something within yourself which you don't feel right, whether it was health issues for one of us, or it was, you know, living in an environment that doesn't make us feel very good. So there is a stimulus, right? When we are talking about stress, do you guys agree? There is something that makes us stressful. There is a stimulus, and that stimulus is not making us feel good. It is, you know, this is the happiest, and that stimulus is making us like this. It is disturbing the equilibrium. So our smile is going this way, haphazard way. So there is a stimulus, and that stimulus is bringing a disequilibrium. And even though there is equilibrium, there is, you know, there is a situation which is not in our control, which does not make us feel good. What makes us worse is that we are not able to control it. We don't have any strategy, we don't have anything that we can do about it, and that is what makes us stressful. कोई problem है, you know, when you are posed when you get a exam paper, question paper in your exam. So अगर तो आपको आता है, you have a problem, you have a stimulus, and that stimulus can make you uncomfortable कि हाँ exam है, and as exams make me feel scary. But if that situation is under your control, अगर सारे questions आपको आते हैं, will you feel stressful? You guys have to be, you know, you need to keep your fingers on the unmute mode. So just be very active and responsive. Will you guys Okay. feel stressful अगर आपको एग्जाम में सब कुछ आता है? No. No. No, नहीं आता, नहीं, you won't feel stressful. But अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है, situation is not in your control, your friends are not helping you, you're not able to cheat, you don't know what to write, you have that fear that you may, you know, not be able to pass the exam, things go out of your control, and that is when you feel stressful. तो it is possible कि stimulus है, उस stimulus को हम पसंद नहीं करते हैं. But the issue here is what is making us stressful is कि हमारे पास कोई solution ही नहीं है. Situation is not in our control. Okay, so stress can be defined as just a minute. So what is stress?
Stress can be described as the pattern of responses an organism makes. Like we are trying, Arjun is trying, or Shweta is trying, Pooja is also trying. We are making some responses. Okay, ताकि जो भी हमारे आसपास की environment है और whatever issue we are facing, हम उससे बाहर आ जाएं. Right? That its situation is actually disturbing our equilibrium. हम आराम से रहना चाहते हैं. We want to live a happy life. We want to be stable. We want to be in the state of equilibrium. Right? Arjun wants to feel very good, and Shweta, Kangan, Pooja, we all want to feel happy कि हमें शांति से जीने दो. And we are trying our best. But whatever is happening, it is exceeding our ability to cope it. We are not able to cope it, and that is what is making us feel stressful. I hope that makes sense. You're able to derive to a definition by relating it to your own, environment. Yes, ma'am. Right? This is what stress is. And yes, this question was also in the quiz, that what is stress derived from? Whether it is derived from a Latin word or a Greek word. For those of you who are preparing for entrance exams, it's important to know. Even if you're writing in your, board exam, so you should know कि इसकी जो etymological meaning है वो कहाँ से derive हो रहा है. Now, where is this word derived from? It is derived from a Latin word strictus or stringier. Okay, which means tight. So when you feel stressful, you feel अंदर से you don't feel good, right? You feel like tightness in your muscles, or tightness, feeling of tightness or in breathing also, and this is how you feel. So that is why stress is derived from these two words, which means tight or narrow. Okay, strictus, compressing itself. Okay, so you should know this thing. What is the word psychology derived from? Can you tell me? Greek. Greek word, which word? Psyche and logos. Yes, absolutely correct. Good. Okay. So stress is like electricity. What is your interpretation of this? Can you guys tell me why am I saying stress is like electricity? I'm not saying, even NCERT is saying stress is Because like it gives us electricity. energy. Okay, it gives us energy. Yes, very good. Okay. So since there is some flow of current due to which the bulb glows, so and that minimum current is required for the bulb to glow, so I think that would be the positive stress for us. But if there is a Right. lot, like a high current due to which the bulb, it will blast, so that would be distress for us. So some sort of stress, it is required in our life so that we can perform good. And then if there is a very high level of stress in our life, then it can lead us to distress, or it might hamper our performance. Absolutely correct. Okay. So who was this? Pooja. Okay. Pooja has studied NCERT properly. Okay. So stress is like electricity. When I say stress is like electricity, I mean that, yeah, exactly just the way Pooja said, कि थोड़ा सा stress चाहिए है. If you won't have even a little bit of stress, you will not study for exam. You will not become carefree, you will become careless कि परवाह ही नहीं है, why should I study, why should I even attend this NCERT lecture if you're not stressed, है ना? So थोड़ा सा current is required to make that bulb glow, or make that light glow, or even make that fan rotate. But जब वो stress बहुत ज्यादा हो जाता है, जब electricity बहुत ज्यादा flow हो जाती है, तब क्या होता है? Bulb fuse हो जाता है. Similarly, जब stress बहुत ज्यादा हो जाता है, what happens? What happens when we are extremely stressed? Our level of performance decreases. Yes. तभी तो जो बच्चे पूरी रात they study for their exams, they are so stressed that they want to cover everything before the board exam. Students are so stressed. When they go to the exam and they look at the question paper, they get blank. Bulb fuse हो जाता है because they don't remember anything. They're so stressed. So there is a positive stress, which is eustress, which is required. Eustress नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, life ही नहीं चलेगी, right? So it is a positive stress that makes you work, and there is a negative stress, which is distress.
which which can just harm you, which will even disturb your positive performance. Does that make sense? Are you Yes. guys able to understand? Eustress is the Yes. positive stress which is required to make you work, but distress is the negative stress. It is when stress is so much that it is not even allowing you to be efficient or be productive, right? Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay. So again, there was a function of pre-assessment so that क्योंकि कुछ चीजें आपको नहीं आती थी, which हो सकता है if I directly give you this presentation आपको चीजें याद ना रहे, but I gave you a pre-assessment so that you know कि मुझे ये चीजें नहीं आती हैं, and when I see them in the presentation I know I need to focus here and this is something that I don't know, right? So it's possible that some of you did not know what stressor and strain are. So stressor, though, I think everybody would know. Arjun, what was stressor in your case? My situation, my situation with my parents was my stressor, I guess. My parents, or Yes, this was your stressor. This was the yeah, cause that's making you feel not good. yeah, Your environment, yeah. we can say. Okay. Kangan, what was stressor in your case? Yeah. A new situation. Pardon? A new situation. Okay. Uncertainty makes you feel Yeah, stressed. kind of. Is that? Yeah, Yeah, yeah. it happens with me too. I want to know everything beforehand. Okay, I plan everything very properly. So yeah, Like uncertainty I is want I very want stressful. things to be my way. Like if I have planned something, I need the plan to work according to me. Absolutely. Kuch bhi, if anything goes haywire, we are absolutely We are haywire. so anxious, like the whole day becomes like bad. Absolutely. Absolutely. मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. What about Pooja and Shweta? What are stressors in your case? In my case, it was my physical health. Mm-hmm, yes. And Shweta, what about you? Okay, she'll I type. think And in environment Mhm. stress. Yes, environmental stress. Okay, okay, good. So it's not that you're going to learn everything new in this. It's that कि आप लोगों को already बहुत सारी psychology आती है. You must have heard, right? Psychology has a long past but a short history. So the moment we are born and we start interacting with the environment, we become psychologists. We know a lot about psychology. We know how the other person will respond अगर मैं उसको ये चीज कहता हूँ. अगर मैं ये काम करता हूँ, we are able to anticipate what my mother's or my father's response is going to be, right? The things that psychologists do, this is the behavior pattern of my this friend, and my other enemies or the people whom I don't like, this is the way they behave in their lives. We all know this thing, right? We all know about the people we interact with. Similar is for stress. Stress के साथ हमारा relation is like from the childhood only. आजकल के बच्चों का तो it is from LKG UKG itself. We have a very in-depth relationship with stress, and even with psychology. What you're going to learn in this session is only the names which psychologists have given, or a few things that you did not know कि हाँ चीजें ऐसे भी work करती हैं. अच्छा, अगर मेरे साथ ऐसा होता है, and if I feel like this, probably this is the cause behind the same, right? So I hope it is not boring. Okay, so stressor is the cause of your stress. What makes you stressful? So it could be internal, it could be your health issues, it could be something that you're absolutely cooking in your mind, right? Or it could be a perception towards how you're seeing things, or it could be actually something present outside, right? Like I am giving the session and the dog is barking and it is actually stressful that it is my first session with you guys. So the cause of stress can be external as well as internal. Agreed? Yes, If you guys ma'am. agree, yes, right? Okay. So you guys are very nice. You understand my situation. So it's one of the qualities of psychologists. They are able to put themselves into the shoes of others, and you can understand. If there is an external stressor, it's possible that that situation is under our control, and it is possible that that situation is not under our control. And when the situation is not controllable, we feel stressful. Okay, what is strain?
we'll give a special mention to the person who tells what is strain. What does anybody know? Yes or no? What is strain? Pooja, can you do you want to make a guess? We have Gulafsha, a new participant here. Gulafsha, do you want to try guessing? There's nothing right or wrong. Okay, Gulafsha will take some time to, adjust in our environment. Yes, ma'am. Okay, can you guess what is strain? Strain kya hota hai? No, ma'am. Okay, no. Okay, all right. So there is a stressor outside, okay, and you are trying hard to, respond to that stress, and you are trying everything possible. So whatever you are trying to overcome that stress is strain. It is your reaction to the stressors. How are we actually reacting to those stressors? You are attending a class online, and your siblings are shouting at the back, they're playing and they're disturbing you. So how do you react towards that stressor? Is strain. Okay, so can you guys tell me how do you respond to your situations? What is strain in your case? The more you are able to relate, the better your memory will be, about this, all these things. So yeah, Kangan, what is strain in your case? How do you try to react or overcome your stressors? I try to be calm. Like whenever there is such a situation, I try to calm myself. Like, yeah, okay, let's accept it. Whatever it is, then let's accept it. Okay, right. ये तो response हुआ ना, reaction बताओ. Reaction क्या होता है? Reaction like kind of पहले तो बहुत ज़्यादा shocking, like यार ये क्यों हो रहा है, मतलब it's like a हाँ, ये total जो and reaction है ना, ये strain है. Response is not strain. वो तो हम सारे चलो जुगाड़ लगा ही लेते हैं बाद में कि हाँ चलो अब ऐसे अब कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ तो करेंगे. जो first reaction है ना आपका, how do you react in a stressful situation? That is your like strain. what is happening, like क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, और just yeah, so Right. that's Okay. basically Arjun, what Check. about you? Yeah, mine it's like I just ask the whys a lot. Same like I just ask the whys a lot. I introspect sometimes. The first step is just like I ask myself whether everything was in place or whether I did the right thing or not. I just introspect and just and I just keep calm. पता नहीं कैसे होता है ऐसे, but I'm not like pissed off when I'm stressed. Okay. What do I do when I'm stressed? I think my brain stops working when I'm stressed. I just keep working and working और मुझे पता ही नहीं चलता है. So I have so many things at hand when I'm stressed कि मुझे deadlines हैं, काम करना है. And the way I do it, my productivity decreases. I have to do so many things at a time. So I also shout at others when I'm stressed. Yes, that is also something, that is also a strain that I have कि वो गुस्सा कहीं का होता है, and that stress that gets out in some other way. I think all of us do that. We can relate to it. Isn't it, Pooja? Gulafsha, can you relate? Yes, ma'am. Even I do the same thing. I either ignore them completely or I just shout at them. We do this thing. We all do it. मैम अगर बात ऑनलाइन क्लासेस की आ रही है तो उस टाइम पे तो इग्नोर ही करना पड़ेगा कि अच्छा बाद में समझाती हूँ, अभी फिलहाल के लिए पहले क्लास इंपॉर्टेंट है, बाद में आके देखती हूँ. Absolutely. So we all have this trait. वो अंदर गुस्सा we keep accumulating. Okay, we'll come back to this. Can irritation be a strain? Yes, of course. Why not? It is also a reaction that we have. Oh, yeah. Right, absolutely. Good. So yeah, so we learned what is stressor. We have learned what is stress. 3 conditions I told you about stress. There should be a stimulus. Okay, that stimulus should make you feel very uncomfortable. It should make you feel like कि मेरा equilibrium जो मैं शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता था वो पूरी डिस्टर्ब कर दी है मेरे स्ट्रेस ने, एंड मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ. थर्ड कंडीशन इज दैट
it is exceeding my capability to cope up. अब सिर्फ 4 hours रहते हैं मेरे एग्जाम में, या एक रात है, एक रात में मैं पूरा सेमेस्टर का सिलेबस कैसे पढूं, राइट? सो इट्स बियॉन्ड माय कैपेबिलिटी. अगर तो है कि आई हैव सफिशिएंट टाइम फॉर माय एग्जाम्स, कि 6 महीने रहते हैं, आई विल नॉट बी वेरी स्ट्रेस्ड. या फिर चलो एक ही चैप्टर का टेस्ट है 2 दिन बाद, आई हैव सफिशिएंट टाइम, इट इज विद इन माय कैपेबिलिटी, विद इन माय एबिलिटीज टू कोप अप विद दैट, आई विल नॉट फील स्ट्रेस्ड. But when it exceeds my ability to cope up, the situation becomes very stressful for me. Okay, this is what NCERT says, and this is what we have learned. Can the reaction be physical? Absolutely. We'll be learning. We are going to come to that. Reaction can be physical. Yes. हम करते नहीं है physical reaction ही तो है when we shout at somebody, when we are stressed. That strain can be physical also. Can be emotional also. हम अपने आप को ही overthink कर करके परेशान करते रहते हैं. And we are coming to that. So you guys already know everything. That is what I told you. तो हम तो यहाँ पे सिर्फ we are discussing and we are completing NCERT. We already know a lot of things. Okay, who is the father of modern stress research? ये तो अब सबको पता होगा. ये तो मैंने डाला भी था उसमें प्री असेसमेंट में. Do we all know who is the father of modern stress research? Yes, Okay, ma'am. Pooja knows. Okay, who is it? Please नामकरण करो उनका. Okay, everybody is typing. Hans Sale. Yes, I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, but it's Hans Sale. तो इन्होंने भी स्ट्रेस की एक डेफिनेशन दी थी. इन्होंने बहुत काम करा है स्ट्रेस के ऊपर, जो हम स्टडी करेंगे in the coming time. Okay, so he said that stress is the non-specific response of the body to any demand. तो I'll give you its example in the sense कि stress आया कैसे, you know, stressful situation actual में होती कैसी थी when you know, like there are animals in the forest or something. So now there is a threat or there is a danger. Okay, a threat, there is a threat or a danger immediately. और आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. There is uncertainty. So it is the response that you are going to give is also uncertain. You do not know कि मेरा response अब क्या होने वाला है towards this thing. So this is something that Hans Sale said. He said that it is a non-specific response of the body to any demand. हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं when we are stressed. So whether it is physiologically or nothing is determined. When there is an emergency situation, you can think of it like an emergency. National emergencies होती है ना. So there is suddenly there is something that we do not like at all, or we just don't know how to respond to this situation. So this is how Hans Sale defined it, but later on he was very much criticized, और इसकी definition किसी को खास समझ में भी नहीं आई और किसी को पसंद भी नहीं आई. I mean the other psychologists. So they said कि नहीं, this is not a very good definition. So when you are quoting in your exam, you can quote the definition जो मैंने आपको पहले दी है, and you can also quote कि Hans Sale ने ये definition दी थी, but it was not liked very much. Okay, so we all know it is Hans Sale who is the father of modern stress research. Just a minute. So now what are the features? We all know what are the features of stress. Think. Okay, I'll give you some hints. सीधा एकदम से हमने कौन सा क्रैम करा है, और हम क्रैम करेंगे भी नहीं. So features of stress हम ऐसे okay. So features, किसी भी चीज के features यही होता है ना कि वो चीज कैसी है. Oh, okay. So to learn what are the features of stress, tell me, is stress innate? सब में बचपन से ही stress होता है? Are we born with stress? Is it innate? Innate like heart beating? Innate like our personality? How many of you say yes, and how many of you say no? I say yes, maybe. Okay, you say stress is innate. No. Yes, even I think so. अच्छा, कैसे? मुझे example दो. How is stress innate in a little baby?
I think it can be inherited through our genes, like that we get from our parents. जैसे disorders में होता है, like disorders में भी a lot of disorders जो है ना वो genetically heritable होते हैं. So I think stress, if our parents are very much stressful and वो environment अगर ऐसा provide कराते हैं हमें, तो I think stress can be to some extent innate. Okay, but environment भी फिर आपने बोल दिया. Yeah, but then I'm saying कि वो जो stress है वो मिला parents से है, but then जो environment है हमारी, that is also playing a major role in that. Okay, तो सिर्फ innate का बताओ. Do you think stress is innate? हाँ जी, what is your opinion, Arjun? I think the level and the intensity of stress may vary according to the genetics, but I think it's kind of innate, but the intensity can vary according to the genetics. So have you guys observed this thing कि जिनके parents बहुत stress लेते हैं उनके बच्चे भी बहुत stress लेते हैं? Are you guys seeing this thing? Yeah, I can relate. I can Okay, totally you can relate to actually this. relate. Okay. Yeah, I can also relate. My sister and my mother, like. मान लो environment में कोई ऐसा stimulus ही नहीं है जिसकी चिंता करने की हमें जरूरत है, stress लेने की जरूरत है, फिर even Yeah, like बड़ी अच्छी खासी stress life is चल रही है like stress is my daily dose. I take 2 to 3 dose every day. Okay, it's the case with everybody, but it's not innate. छोटे बच्चे को stress थोड़ी ना होता है कि उसको दूध की bottle नहीं मिल रही है. I don't think it is Gradually it innate. develops. Okay, it with gradually time. develops. Yeah. Yes, gradually develops. Innate नहीं होता है, हम सिखाते हैं. So it is like emergency behavior. That reside in your environment. Stress नहीं. Sorry, mom, your voice is breaking. I think, is it a problem for your side or from my side? It's I think it's from my side is saying my internet connect. Audible now? Yes. Yeah, it's okay. So, does it reside in your environment? आपके environment में कहीं stress पड़ा होता है? Yes or no? Yes. पड़ा होता है, कहाँ पड़ा होता है? बताओ एल्मीरा में. Environment में environment में पढ़ा होता है मतलब environment से ही Does it होता है ना? reside in your environment? Like it's But not environment physically Environment की present. वजह से ही होता है. हाँ, environment की वजह से होता है. Okay. कोई क्या एग्जांपल है? एग्जाम्स वाला ही ले ले. Yeah. या किसी के पास कोई बेटर एग्जांपल है तो वो दे दो, नहीं तो I'll take एग्जाम्स का एग्जांपल. No, exams is better. We all can relate. Okay, ठीक है. तो so exams are stressful. Is it for everybody? No, Not for the toppers. Not for the toppers. तो इसका मतलब if we say कि stress is in the environment, तो फिर तो सबके लिए होना चाहिए. Like some people take it as a stress, some people take it the other way. It depends from person to person. Okay. So if I say कि अच्छा, तो not for the toppers. When you say it is not for the toppers, that means there are individual differences also. तो कुछ रोल environment play कर रही है, कुछ रोल हमारी heredity play कर रही है. तो it depends कि आपकी transaction कैसे हो रही है, isn't it? How are you actually handling that environment? है ना, यही हम सब लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा रोल हमारे जेनेटिक्स प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा रोल हमारी एनवायरनमेंट प्ले कर रही है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि हमारी एनवायरनमेंट कैसी है. नाउ आई टेल यू, मी एंड माय ब्रदर वी लिव इन द सेम होम, बट आई एम द वन हु गेट्स मोर स्ट्रेस एंड ही इज द वन हु सेज लाइक आई डोंट केयर. उसको कोई कुछ कह भी देता है तो इट डजंट अफेक्ट हिम. एनवायरनमेंट इज द सेम, सिचुएशंस आर सेम, बट द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट. अगर हेरिडिटी का रोल होता फिर तो हम दोनों का रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए था ना. But the hormones and the chemicals which causes extreme stress, so cannot it be like suppose I have that extreme level of hormones, so it causes me more stress, so it can be inherited.
because I was born with such high level of hormones. Maybe I don't know, to be honest. What I feel is that boys are less stressed compared to girls. Like the same situation is with me and my brother. Like he has his exams Nah. tomorrow, and he has like almost 70% of his syllabus not completed, and he's totally free. Like he's like raat bhar mein kar lunga. And if I would have been in the same situation, I would have panicked like anything. So yeah, I Okay, think there are gender differences in stress. No, yeah. no. Not at all. Not Not at all. exactly, but what I have observed, like Not at Okay, all. Pooja and Shweta, what is your opinion? Please jump into the discussion. Okay. Yes, ma'am. Gender differences है stress में? No, ma'am. नहीं है. Yes. Okay, so guys, देखो, is something that is already inside of us, but and it is something that environment triggers. Mm. Does that make sense? है ना? Yeah. ऐसे कह सकते हैं. It's already there in us, but उसको trigger करने के लिए हमें कुछ चाहिए, और जब हमें वो मिल जाता है, then it flourishes in us like anything. So we can say that it is a transaction that is happening between the individual and the environment. है ना? अब individual अगर environment के साथ अच्छे से transact करेगा, if he knows how to handle it, then तो he can move ahead of stress very nicely. अगर उसको नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर एनवायरमेंट, then obviously it is going to be stressful. So it is something that is triggered by the environment, but again we also have a role in it. Okay, what is stress? Where is stress? And अच्छा, stress static होता है या dynamic होता है? You understand what is static and dynamic? Dynamic होता है, I guess. Okay, you understand the meaning of static or dynamic? And that was my question. Everybody knows? Yeah. Static is something that stays stable. कोई भी situation है, कोई भी person है, वो हमेशा एक ही तरीके से stress लेगा, एक ही level का stress होगा, एक certain duration के लिए उसका stress चलेगा. Dynamic is कि situation पे depend करता है हम कितना stress लेते हैं, person to person vary करता है वो कितना stressed feel करता है. तो first feature of stress that we studied is कि stress is a transaction between the environment and the individual. It depends कि वो कैसे transact करता है, कैसे उन दोनों की interaction होती है और stress trigger होता है या नहीं. Second is stress static है या dynamic? What about what do you think? Ma'am, I think dynamic. dynamic. Shweta and Pooja? No, कोई it's है? dynamic. It's Dynamic. dynamic. हाँ, dynamic है. Okay, very good. सबको पता है. So stress is dynamic in nature. जरूरी नहीं है कि हम हर बारी एक ही लेवल का स्ट्रेस फील करेंगे. It depends on the situation, it depends on the person or the support we have, the resources we have. Accordingly, अगर एक बंदा भी है तो उसमें भी बहुत सारी variety of stressful feelings होंगी. ठीक है, अगर MST है या फिर एक नॉर्मल सिंपल सा टेस्ट है तो शायद मुझे इतना स्ट्रेस फील नहीं होगा, बट अगर फाइनल एग्जाम है और मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो है, my stress level is going to shoot skies, right? So it is dynamic. This was the second characteristic. Okay, does stress disturb your state of homeostasis? Do we all understand what is homeostasis? If you can No. switch on your videos, all of you, it gets comfortable and easier for me to teach. Okay, thank you, Kangan. Okay, what is homeostasis? Balance. गुलफ्शा बताएगी, कोई नहीं बताएगा. गुलफ्शा has given very less answers. Ma'am, could you explain homeostasis? Gulafsha, you're not audible. Hello? Hello? Yes, you're Ma'am, audible. could you now. please explain homeostasis? अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है. Who will help Gulafsha? वर्ड को ब्रेक करके देखो. One word is homeo, second word is stasis. Oh, that means stable, with something which is stable. So that Yes, means very when correct, right? there is some sort of balance. Absolutely. तो स्ट्रेस हमारे वो जो बैलेंस की स्टेट है, the state of balance in our body, the rhythm with which our heart beats, or the pH level that is maintained in our body, या हमारा टेम्परेचर भी, all these things, this is our temperature
इन चीजों की स्टेबिलिटी, दैट इज होम्योस्टेसिस. There is some disturbance. Okay, so homeo means same. Stasis is that state that, you know, okay, somebody's not on mute. Arjun, I think Arjun mute करके unmute करके कहीं चला गया. Okay, so homeostasis is a state which is a stable state, right? It is a state of stable equilibrium between the interdependent elements. So like I told you कि हमारा टेम्परेचर जो है 100 और 99 टेम्परेचर इज इन द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस. बट जब वो होम्योस्टेसिस की स्टेट जो है, टेम्परेचर हो गया, हमारा पीएच हो गया, हमारी हार्ट बीट की रिदम हो गई, ऑल दीज थिंग्स व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड, वी कम आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्यो मीन्स सेम, stasis you can state stable state of stability in our body, that is homeostasis. Okay, so, is that clear what homeostasis is? State of stability in our body, in our physiological processes. तो आपको लगता है स्ट्रेस से हमारा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है? Yes, ma'am. Yes. कैसे होता है? How? Ma'am, when there is कोई stressful situation होता है, like when I told you that there are physical health issues, like मेरे को बहुत ज़्यादा होते हैं, so due to this I cannot focus more on my studies. So I think that Right. then there is a disequilibrium between these things. अगर वो physical health मेरा अगर ठीक हो जाता है, so I think I'll be more able to focus, so there will be a sense of balance in my life. So I think Absolutely, right, it's right. yeah, it's because of the stress which is creating a disequilibrium in my studies. So definitely it disturbs our homeostasis. Absolutely right. Okay, when I say homeostasis, I mean the जो basic physiological process है. अच्छा, have you guys ever noticed जब हम stressed होते हैं तो हमारा मुंह कैसे गरम सा हो जाता है ना? Say एकदम से principal used to call you when you were kids. You are being called in a principal's office. Have you guys noticed? That's racing. Face Yes, पूरा ma'am. गरम हो Yes, जाता है ma'am. and you just start like almost shivering. Heartbeat इतनी rise कर जाती है and you Yeah. don't know what's happening with you. Right? Well, that is how you know your this state of homeostasis is disturbed. तो जो normal body temperature है वो drop हो गया है, ये rise हो गया एकदम से, and your heart is racing. जो उसकी normal rhythm है, it is not in that normal rhythm, and your Yeah. homeostasis is completely getting disturbed. हम थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, we'll study कि physiological क्या इसके responses होते हैं stress के, and you'll be able to relate a number of things. Have you guys ever noticed, अगर आप 2-3 दिन के लिए continuously stressful होते हो, even your digestive pattern it changes, Yes, ma'am. है ना? Yes, It ma'am, changes, totally. Yeah, totally changes. yeah, ma'am, I can relate. In women, PCOD, Yeah, it ma'am, is because I of have. stress. है Yeah. ना? Almost every fifth woman has PCOD. It's because of stress. और हमें लगता है कि stress तो control होने से रहा because every day we are so much stressed. और And generally if you see, it is a very common thing. हर कोई stressed है. And ma'am, it I'm amongst affects one women of like them. anything. You know, we start gaining weight and those facial hair and so much things. Those things, again, it is a vicious cycle. हम stressed है, इस वजह से we are getting बीमार and then again that is making us feel stressed. So we just remain stuck in that vicious cycle. ना? I think everybody is able to relate with that. सभी को stress होता है. Are you guys able to relate? Ma'am, I thought Yes. that my PCOD was just because of my lifestyle, but yeah, today I came to know that it's because of the stress. Stress has a very important role to play in that. Stress, say, there is the stress hormone, cortisol. It plays a very important role in this thing. When you are stressed, like I know people who miss, their periods when they're stressed during their exam time. सिर्फ exams में होता है, otherwise नहीं होता, because in exams you're so stressed. And then we name it as PCOD. So stress is something we need to learn how to cope up with. And we'll also be studying the coping strategies towards the end of this chapter. So, And yeah. I guess I need to implement it in my life. So, yes. So,
हमें सब कुछ पता है, इट्स जस्ट दैट वी आर लर्निंग न्यू नेम्स फॉर दैट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। या फिर कुछ चीजें हाँ जो हमारे साथ होती थी बट हमें नहीं पता था कि इसका कोई साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है। सो या दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो हमने यही पढ़ा कि स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर जो एनवायरनमेंट में कहीं अलमारी में हमने रखा हुआ है या इंसान में है, बट इट हैपेंस विद द ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, है ना? यू वाइज एग्री? अगर एनवायरनमेंट ट्रिगर नहीं करेगी तो ऐसे ही नहीं हम हमारा टेम्परेचर हर टाइम लो या हर टाइम हाई रहेगा या हमारा हार्ट फास्ट ही बीट करता रहेगा। कोई सिचुएशन होगी, इफ यू आर एबल टू सी द लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू आर एबल टू सी कि हाँ कल एग्जाम होना ही होना है, दैट इज व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड। तो एनवायरनमेंट से कुछ तो ट्रिगर आएगा, ओके, एंड इट इज डायनेमिक, है ना? इट्स पॉसिबल कि मेरे ब्रदर को थोड़ा कम स्ट्रेस होता है एग्जाम के में और मुझे उसी एग्जाम को देने के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है। thousands of people appear for UGC net. I cannot say कि हर किसी को equal amount of stress ही है. Some people take it very casually, others take it with lot of burden, जैसे पता नहीं दुनिया ही खत्म हो जाएगी। So it is dynamic and it disturbs our state of homeostasis. We all know that, ना? So you guys can remember that principal के room में जाने वाला example. तो you just start shivering. Okay, so yes, how do we perceive stress? Okay, can you guys tell me perception towards stress? कैसे perceive करते हैं हम stress को? Make a guess. We all are psychologists. हमें सब कुछ पता है. अब layman language में बताओ. I'll tell you how to put it. You know, phrase it in the other in the psychological language. तो how do we perceive stress? अब stress आया, stressor आया. तो सबसे पहले कोई भी एनवायरनमेंट आई से एग्जाम्स आ गए, ओके, एकदम से आपको पता चला कि ऑनलाइन ही ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं, ओके, तो सबको पता चला एंड एग्जाम्स भी कब है? 15 दिन के बाद ही आपके एग्जाम्स है भी ऑफलाइन है। व्हाट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिस्पांस टुवर्ड्स इट? बताओ। अर्जुन कहीं चला गया आई थिंक। Ma'am, I'll be excited. Okay, you will be excited. नहीं, मैंने उसको stressful situation की तरह present करा था. Okay, you're excited because you're prepared. तो अब तो हमारे पास पूरे resources हैं, हमें सब कुछ आता है. Even though I'm not even though I'm in stress, I'm usually laughing. Okay, that's really nice. ठीक है. Okay, what about Kangan? अब हमें पता चल रहा है कि stress is dynamic in nature. हर कोई अलग अलग तरीके से परसीव करता है। कंगन बताओ, एग्जाम्स हैं 15 दिन के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, like एंड ऑफलाइन है। like my brain stops working. I will try to find a solution कि कैसे इस एग्जाम को अवॉइड किया जाए या फिर कैसे इसको पोस्टपोन किया जाए या ऑनलाइन कराया जाए। एक्चुअली आई हैव डन इट, लाइक मेरे प्री बोर्ड्स थे एंड आई हैव ट्राइड इट कि मैम प्लीज ऑनलाइन करा दो, आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ हुआ क्या? सबसे पहले हमने सिचुएशन को परसीव करा, है ना? हमने देखा कि अच्छा एग्जाम्स है, ठीक है, अगर ओके, सो देयर आर एग्जाम्स एंड ओके, हमें पता चल गया एग्जाम्स है, ऑनलाइन है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है ना? हमने सिचुएशन को पहले असेस करा, अच्छा ऑनलाइन है, फिर तो सारे फ्रेंड्स साथ में ही है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी, है ना? अच्छा थोड़ी देर बाद मूड बदल जाता है गवर्नमेंट का, यूजीसी से इसकी नहीं ऑफलाइन लेंगे, सब चेंज हो जाता है ना? सो इट्स ऑल इन द हेड, इट इज हाउ वी परसीव द सिचुएशन, है ना? हाउ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वन ऑफ अस सेड कि हाँ आई विल बी वेरी हैप्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाँ मेरी प्रिपरेशन नहीं भी है। सो परसीव स्ट्रेस बेस्ड ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल टू एग्जाम, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, है ना? इफ आई हैव द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेस, यू नो दिस थिंग, कि मैं तो प्रिपेयर्ड ही था यार, एग्जाम्स थे, इन्होंने फिर कभी ऑनलाइन कर देते हैं, कभी ऑफलाइन कर देते हैं, I have nothing to do with it, I have the resources. Another thing is how I perceive the event. Okay, it is stressful, ठीक है, अब होने हैं तो सबके ही होने हैं, किसी को भी नहीं आता होगा, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, है ना? ऐसे भी तो हम परसीव कर सकते हैं। So individual उसको कैसे परसीव करते हैं, that's also one of the thing. This is something that I was going to teach you. अच्छा, I had also asked it in the pre-assessment कि cognitive theory of थी,
It was given by Lazarus and his colleagues. Okay, you guys have to remember this thing. Cognitive theory of stress was given by Lazarus and his colleagues. तो हाँ, अब हम आते हैं इस पे. It's a very nice theory. We can all able to relate it. हम अभी relate करेंगे. तो हमने अभी कहा स्टिमुलस इवेंट क्या आया, हमारे एग्जाम आ गए. अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है कि एग्जाम तो चलो होने ही है, एग्जाम के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि हम पास नहीं करेंगे बच्चों को. ठीक है. अच्छा, लॉकडाउन की स्टार्टिंग की सिचुएशन थी, हमने कहा चलो एग्जाम हो रहे हैं, अभी तो पोस्टपोन हो गया. फिर एकदम से गवर्नमेंट आती है कि नहीं, हम तो एग्जाम लेने वाले हैं आपके जून में. मई में लॉकडाउन हुआ, से जून में एग्जाम होने वाले हैं. ठीक है. सो व्हाट डू यू सी, यू परसीव द थ्रेट. अच्छा, डरा रहे हैं हमें कि एग्जाम होंगे. अच्छा, देन यू विल असेस द सिचुएशन. विल यू और विल यू नॉट असेस द सिचुएशन? एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? व्हेन यू हर्ड ऑनलाइन होंगे, अच्छा, देयर इज नथिंग टू वरी, इररेलेवेंट है, ये तो हार्मलेस सिचुएशन है, मुझे इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू फील स्ट्रेस्ड. अग्रीड? सिचुएशन से कोई थ्रेट नहीं है, कोई हार्म नहीं है, ये तो सिचुएशन मुझे बिल्कुल नहीं डरा सकती. मेरे पास सारी बुक्स हैं, गूगल है, हर चीज है, तो आई डोंट नीड टू बी स्ट्रेस्ड. वही अगर वो सिचुएशन थ्रेटनिंग है, ओनली एंड ओनली इफ एग्जाम्स आर ऑफलाइन, अब मुझे किताबें खोलने की जरूरत है. अब मैं देखूंगा कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई मेरी रहती है. अच्छा, मेरे नोट्स इस अलमारी में है, अच्छा मैंने यहाँ पे रख दिए थे, मुझे याद ही नहीं, मुझे मेरा रजिस्टर मिल ही नहीं रहा है, है ना. फिर आई विल गो टू माय रिसोर्सेज, जो कि मुझे बड़ी मुश्किल से ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्स तो होने नहीं थे मुझे लगा, तो मैंने तो उनको छिपा के रख दिया. देन आई विल गो टू द सेकेंडरी अप्रेजल. सो अच्छा, मैंने अप्रेजल का मीनिंग तो बताया ही नहीं आप लोगों को. Okay, I was telling you in general terms. Appraisal होता है कि how we see something, how we approach or how we perceive something, that is appraisal. How we assess something or someone, that is appraisal. Appraise, हम किसी चीज को, you can combine two words, app, praise. Praise होता है किसी की तारीफ करना. So how do you appraise something? आप किसी चीज को perceive कैसे करते हो, that is appraisal. ठीक है. लजारस ने जो थ्योरी दी, इसने दो चीजों की बात करी. He talked about primary appraisal and he talked about secondary appraisal. Primary appraisal में वो क्या कह रहा है कि जब बिगिनिंग में स्ट्रेस आया है ना, तो पहले आपने अपनी सारी सिचुएशंस को देखा कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन को असेस करा, ये हार्मफुल है या नहीं है, मुझे डरने की जरूरत है भी या मैं मतलब ऐसे थोड़ा स्ट्रेस हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ा स्ट्रेस मोड में चला जाऊंगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर दूंगा, अपनी हार्ट बीट एकदम से इंक्रीज कर दूंगा, रेस्पिरेटरी, है ना. तो वी आर वेरी स्मार्ट पीपल. तो पहले प्राइमरी अप्रेजल होगा, सिचुएशन थ्रेटनिंग है या नहीं है. अगर सिचुएशन थ्रेटनिंग है, अगर एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, तभी मैं अपनी किताबें ढूंढूंगा, नोट्स ढूंढूंगा और पढ़ूंगा बैठ के, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ूंगा. इज दैट करेक्ट? अग्रीड? Yeah. Did you guys understood what is primary appraisal and what is secondary Yes, ma'am. appraisal? Yes, ma'am. Okay, so can you guys sum it up for me? Gulafsha, can you tell me what is primary appraisal? मैम, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर जैसे ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, मतलब तो हमें एग्जाम देने से चाहे जिस भी तरीके से हो, तो मेरी थिंकिंग है, मुझे तो प्रिपरेशन करनी है चाहे जैसे भी हो, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली देना है. उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑफलाइन हो रहा है या फिर ऑनलाइन हो रहा है. No, that is not how I am saying it is. I am saying कि कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी सिचुएशन है, हम पहले देखते हैं कि मुझे उस सिचुएशन से डरने की जरूरत है या नहीं है, है ना. अगर तो बच्चे के एग्जाम्स ऑनलाइन है तो वो इतना नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है मेरी फैमिली मेरी हेल्प कर देगी, मम्मी को भी है कि मैं पास हो जाऊं, तो मम्मी को बोलूंगा मम्मा आंसर्स बताते जाओ, मैं लिख लूं, है ना. तो अगर ऑफलाइन है तो फिर मुझे डरने की जरूरत है, और अगर मुझे डरने की जरूरत है, तब मैं सेकेंडरी अप्रेजल में जाऊंगा, तब मैं ढूंढूंगा कि मुझे अब क्या करने की जरूरत है. हाउ डू आई कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, है ना. मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे पास नोट्स हैं या नहीं है, मैं अपने फ्रेंड से ढूंढ के लाऊं, क्या करूं. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है. प्राइमरी अप्रेजल में वी आर ओनली असेसिंग द सिचुएशन. इन सेकेंडरी अप्रेजल वी आर फाइंडिंग द रिसोर्सेज
if the situation is threatening. इसके आगे भी कुछ लिखा है. हाँ, तो अगर तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारी तैयारी हो गई, अगेन नो स्ट्रेस. अगर नहीं है तैयारी, नोट्स ही नहीं है, बुक्स ही गायब कर दी हैं, रद्दी वाला ले गया, क्या हो गया पता नहीं, आई डोंट नो, तो विल फील स्ट्रेस्ड. ओके. अच्छा, ये अप्रेजल सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव. ओके, वेरी गुड. ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग इट इज सब्जेक्टिव? मैम, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Yeah, because like I'm scared of animals, and animals जो मतलब अगर specifically मैं बात करूँ, for example if I'm scared of a dog, then dog will be a stimulus event, ठीक है, which will cause stress to me. अगर उसका मालिक वहाँ पे है तो वो situation जो that would be harmless. लेकिन अगर उसका मालिक नहीं है तो फिर आएगा secondary appraisal. अब अगर कहीं भागने का रास्ता है, दरवाजा वगैरह खुला है, तो मैं भाग जाऊंगी, मतलब रिसोर्स अवेलेबल है भागने का, तो स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है. लेकिन अगर वहां पे भागने का कुछ है ही नहीं, ठीक है, अगर वो मैं उसके रूम में चल जाती हूँ, वहां पे मालिक नहीं है और डॉग है, फिर तो भाई स्ट्रेस ही स्ट्रेस होने वाला है, अलग ही लेवल का. वेरी गुड, वंडरफुल, यू हैव गिवन अ बेटर एग्जांपल. दैट वुड बी सब्जेक्टिव, ठीक है. तो वो बिकॉज़ सारे लोगों को डर नहीं लगता. बिल्कुल, परफेक्ट, कुडोस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है. ओके, सो आई ओके, अब तो आपको एक और एग्जांपल मिल गया. आई होप इट शुड बी क्लियर कि अब प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है, सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है, और लजारस ने हमें ये क्या थ्योरी दी है. ठीक है, तो इतनी गंदी थ्योरी नहीं है, अच्छी है, वी आर एबल टू रिलेट इट, है ना? Yes. सारे साइकोलॉजिस्ट गंदी गंदी थ्योरीज नहीं देते. ओके. अच्छा, हार्म और थ्रेट में क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आई नो कि आप सबको पता है हार्म क्या होता है और थ्रेट क्या होता है. कब हम कहते हैं दिस सिचुएशन इज हार्मफुल और दिस सिचुएशन इज थ्रेटनिंग? अच्छा, आई गिव यू अ लिटिल मोर हिंट. मैं कहती हूँ कि अच्छा ये मेरा इतना हार्म हो चुका है, इतना नुकसान तो मेरा हो गया, क्या मैं ये भी कहती हूँ मेरा इतना थ्रेट हो गया? कह सकते हैं? I think harmful is something related to something physical, and Threat is, I think, pre-harm, something like that. something cognitive. And harm is like post-harm. Harm is, I think, the negative consequences maybe. Very good, you are very close. And threat could be like the way we perceive that thing. That could be yeah, the way I think we perceive वो threatening हो जाएगा. Very close, pretty much correct. तो harm क्या होता है? It is the assessment of the damage that has already been done. जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं, दैट इज हार्म. कि इतना नुकसान मेरी कंपनी को, इतना नुकसान मुझे पहुंच चुका है. ओके, बट जब हम थ्रेट की बात करते हैं, थ्रेट इज ऑलवेज इन, इट इज असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर डैमेज, जो अभी हुआ नहीं है, बट दिस इज अ थ्रेट टू मी. डॉग इज अ थ्रेट टू मी, एंड आई नो डॉग इज हार्मफुल. जब मैं कहती हूँ डॉग इज हार्मफुल, आई नो कि इस डॉग ने पहले किसी को नुकसान पहुंचा दिया है, या इसने किसी को बाइट किया होगा, या फिर मैंने ऐसा कुछ देखा है या सुना है. दैट इज व्हेन आई से डॉग इज हार्मफुल. बट व्हेन डज दैट डॉग बिकम थ्रेटनिंग? जब मेरे को पता है मैंने उस रास्ते से स्कूल से घर वापस जाना है और रास्ते में मुझे डॉग मिलेगा. अ फ्यूचर सिचुएशन, जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका है और उसकी असेसमेंट मैं कर रही हूँ, दैट इज व्हेन आई से डॉग इज हार्मफुल. ये चीज हार्मफुल थी या ये हार्म था? हार्म इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन. बट थ्रेट इज द असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल फ्यूचर डैमेज. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हो सकता है वो डॉग बेचारा आज खाना खाने में मस्त हो तो आपकी तरफ ध्यान ना दे. ओके, टुडे इट इज लेस थ्रेटनिंग, बट इट विल ऑलवेज रिमेन हार्मफुल, क्योंकि वो एक बार नुकसान पहुंचा चुका है. क्लियर? हार्म इज जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसकी असेसमेंट कर रहे हो. डॉग ने पहले किसी को बाइट कर दिया है, या कि आपने किसी से सुना है कि डॉग बाइट करता है, तो इस वजह से यू थिंक कि डॉग इज हार्मफुल. बट थ्रेट इज फॉर अ फ्यूचर सिचुएशन. आप अभी से असेसमेंट बना रहे हो
कि हो सकता है कि डॉग मेरे को बाइट कर जाए. इट इज अ पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन. इट इज थ्रेटनिंग टू यू. कोरोना इज अ थ्रेट. इट इज ऑल्सो अ हार्म. इट इज अ हार्म बिकॉज हमें लगता है कोरोना इज हार्मफुल क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बीमार कर दिया. मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ. अगर मैं बाहर जाता हूँ और अगर मैं लोगों को बिना मास्क के बिना सैनिटाइजर के मिलता हूँ, कोरोना इज थ्रेटनिंग टू मी. मुझे कोरोना का डर हमेशा लगा रहता है व्हेन आई गो आउटसाइड. अब तो चलो नहीं लगता है, बट इट इज थ्रेट. ठीक है, मेक सेंस? Yeah. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. दैट्स नाइस. ठीक है. अच्छा, चैलेंज अप्रेजल क्या हुआ? अप्रेजल हमें पता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अप्रेजल का मीनिंग कि हम चीजों को असेस कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे बनाते हैं चीजों की. हाउ वी असेस समथिंग और समवन, हाउ वी परसीव द थिंग्स, दैट्स अप्रेजल. तो चैलेंज अप्रेजल क्या हुआ? Arjun How we starts perceive taking it as a challenges. challenge. हाँ. How we perceive challenge. How we perceive a situation as a challenge. अच्छा, Okay. मैं नहीं डरता ऑनलाइन एग्जाम से. आने दो जो ऑनलाइन एग्जाम्स आते हैं. आई हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, सब मेरी हेल्प करेंगे. आई विल बी एबल टू क्रैक एग्जाम लाइक दिस. ओके, अच्छा एग्जाम्स आ रहे हैं, आई विल टेक इट एज अ चैलेंज. मैं कोचिंग ले रहा हूँ. आई डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग. सो व्हेन यू assess the thing as a challenge कि I'm taking it as a challenge and I'm not afraid of this. Stress आ भी रहा है, I'm taking it as a challenge कि मैं इसको कर सकता हूँ. Okay, so you are very confident. You have confident expectations कि I'll be able to cope up with this thing. That's challenge appraisal. I hope you guys are not tired. So whenever you're tired, you can type it in the chat box and I'll stop there. Okay. Though I still have a lot to cover. So if you feel tired or bored, you have complete right and authority to give your honest opinion. We'll channelize things accordingly. जब थक जाओ या जब बोर हो जाओ पर बता. अभी मैम टाइमिंग क्या रहेगी? जैसे 6 to 6 to 8 is what I have decided. क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही पढ़ रहे हैं हम हफ्ते में. बहुत ज्यादा है. कंगन के नहीं मैम, फेस से ज्यादा बोला नहीं है. okay. नहीं मैम, वो शिवा सर की क्लास है ना जो 10 डे वाली थी. This is only for Saturday Sunday. ओके मैम. ठीक है. हाँ, दिस विल ओनली Yes, बी ma'am. फॉर सैटरडे संडे. और 10 days वाला तो आपका आज खत्म हो जाएगा ना, है ना? सो यू कैन अटेंड. यस मैम. ओके, विद अदर्स इट इज गुड. कंगन के लिए नहीं आई थी. Can we do it till 7:30, like 1.5 hour का session, because I have my tuitions from 7:30. हाँ, नो प्रॉब्लम. ओके, वी कैन कीप इट टिल 7:30. आई विल ट्राई कि 5:30 to 7:30 कर ले हम आगे. Yeah, if everybody it's is good with possible. it. ठीक है, तो टुडे विल एंड इट एट 7:30. You have your tuition on weekends also? Yeah. I have my Okay, tuitions on we will. weekends only. Okay, all right, no problem. So I hope it suits everybody. 7:30 तक. Next weekend से हम will decide amongst ourselves. Okay. Yes, ma'am. Okay. I wanted to take a session yesterday also, but I think I circulated it on Friday. So I wanted कि at least एक pre-assessment होनी चाहिए. And it's important. I also give you. So and also कल से you will be getting brief messages in the WhatsApp group. तो that will be like years. अब +1 की जो NCERT की बुक है उसमें there are years की 1879 में लेबोरेटरी स्टैब्लिश हुई थी, किसने करी थी, फ्रॉइड ने कौन सा स्कूल दिया, किस ईयर में दिया. तो अगर मैं आपको एक ही क्लास में करवा दूं, you'll never be able to learn it. एक बार लेके भी बैठोगे तब भी याद नहीं होगा. बट अगर मैं आपको रोज के 2 years दे दूं या 2 lines दे दूं लर्न करने के लिए, I think it will be easy to learn. है ना? So that is how we are going to go about it. I'll give you 2 to 3 terms या फिर years every day in the WhatsApp group. You have to learn them. उसको दिन में 3 बार भी रीड कर लोगे यार अपने WhatsApp ग्रुप को खोल के, तो लर्न हो जाएंगी. आज 3 हुई, नेक्स्ट डे प्रीवियस वाली 3 भी और न्यू वाली 3 भी दे दूंगी. सो दैट वे आपको रोज जो है वो लर्न होता जाएगा. एंड बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस सेशन, ऑल द years everything will be on your tips. Good idea? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Sometimes I'm creative. Okay. Okay, I have a very good self-esteem. So मुझे थोड़ी सी आदत है. I'm not egoist, but I like to praise myself. I like to give myself a positive reinforcement. Yeah, that's So great. I think
है ना, थोड़ा No, सा होना seriously. चाहिए. Yeah, बिल्कुल होना चाहिए. So I have this thing. So you'll have to bear with me for the next 2-3 months जितनी देर भी हम पढ़ेंगे. Yeah. Okay. So अच्छा, और क्या फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बताओ. Mm, हमने पढ़ा फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब करती है, हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट अफेक्ट करती है, और अच्छा मैं लिख लेती हूँ, आप लोग याद करो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या रहता है. चलो बताओ. फिजिकल हेल्थ पढ़ी हमने, है ना. फिजिकल हेल्थ हमें लगता है कि अफेक्ट करती है. दूसरा हमने पढ़ा एनवायरनमेंट. ठीक है. एंड नेक्स्ट बताओ. जैसे मैंने थोड़े से ना हम्म. हेलो यूर ऑडिबल, बताओ. मैम, जैसे मैंने ना पहले से थोड़े नोट्स बना रखे हैं स्ट्रेस के ना, तो जैसे उसमें है सोर्स ऑफ स्ट्रेस करके, तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस में क्या क्या आ रहा है. नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ के मत बताओ, खुद बताओ. आपको क्या लगता है, अगर पढ़ नहीं के मतलब बताओगे फिर तो भूल जाओगे. नहीं मतलब मैं उसी से रिलेट करके थोड़ा सा बता सकती हूँ. चलो बताओ बताओ. जैसे डेथ ऑफ लव्ड वन, इलनेस, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब की वजह से भी तो हमें स्ट्रेस हो जाता है ना. हाँ बिल्कुल राइट. तो ये हो गया हमारा. ओके, सो दिस इज सोशल, है ना. डेथ ऑफ लव्ड सोर्स वन, भी ब्रेकअप हो गया, है ना. दीज थिंग्स आर आल्सो स्ट्रेसफुल, है ना. ठीक है, ओके, राइट, गुड. व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी भी बताओ. फाइनेंशियल इश्यूज हो गए. फाइनेंशियल इश्यूज, राइट. इकोनॉमिकल, ओके, गुड. वी आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप थिंग्स. प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, बिल्कुल. इलनेस. और फैक्टर्स क्या है, मुझे ये बताओ. ये तो यू आर टेलिंग मी कि हाँ स्ट्रेसर्स जो हैं, और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. डू यू थिंक हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो भी अफेक्ट करती है, वेदर आई एम इन अ स्टेट ऑफ साउंड माइंड और नॉट, yeah. है ना. अगर तो मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हूँ, इतना थक के आया हूँ, है ना, कॉलेज से आई हूँ या थक के आई हूँ स्कूल से, और घर वाले आते ही मुझे खाना ही ना मिले, विल इट, है ना. अच्छा, खाना नहीं मिला, उसके बाद शाम को ट्यूशन पे टेस्ट भी है, तो बेचारा ट्यूशन का टेस्ट आता भी होगा, इवन देन यू विल बी सो स्ट्रेस्ड कि यू विल नॉट बी एबल टू बी इन अ साउंड माइंड कि मैं अच्छे से अपना टेस्ट दे पाऊं, है ना. दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर. आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसी है. अच्छा, फिर कल्चर कैसा है. The same situation, if you see it in Indian culture and you see in Western culture, it could be stressful in one of them and it may not be stressful at all in the Western culture, isn't it. कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कल्चर कैसे अफेक्ट करेगा. मैम हाँ जी. मैम, अगर हम ड्रिंकिंग का एग्जांपल ले तो लाइक इंडिया में अभी भी लाइक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती है, तो मतलब अगर उनके बच्चे अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल हो जाते पेरेंट्स इस चीज को लेकर. लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट सम वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पे ड्रिंकिंग अल्कोहल इज क्वाइट कॉमन, एंड वो पेरेंट्स के साथ भी लाइक आराम से चिल आउट करके ड्रिंक कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेरी राइट. अर्जुन को नींद आ रही है, ही इज टायर्ड. अर्जुन, वी कैन सी एंड हियर यू. नॉट गुड. इतना बोरिंग नहीं है यार. No, I'm not actually Is it? bored. I'm like studying from the morning, I think. Ethics and all is these are quite heavy subjects, so you know. Okay, we can absolutely understand. You're tired. Okay. Yes, Pooja, bang on, very right, correct. तो हो सकता है something is stressful in our situation. For example, I'll give you an example कि you've seen Indian neighbors कैसे के होते हैं, यस मैम. है ना. you पूरे दूसरों के घर की
हर एक चीज they want to know. It's very मुझे और annoying. मैम इतना ज्यादा मतलब DSLR से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में बता देते हैं वो लोग कि क्या हो रहा है दूसरों के घर में. Absolutely, है ना? It's so annoying and stressful कि aunties want to know everything कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है ना? But I think in foreign या फिर आप मेट्रो सिटीज में भी चले जाओ तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई दूसरे के घर में क्या चल रहा है. They are into कि हाँ we go to our job and we should उधर की दूसरे के लाइफ में दूसरे के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. बट इन इंडियन सोसाइटी वी वांट टू नो इवन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन. इतना बुरा हाल है. सो कल्चर ऑल्सो यू नो इट इम्पैक्ट्स कि हम कितना स्ट्रेस्ड फील करते हैं. इजंट इट? अग्रीड? अच्छा, अभी हम और चीजें देखेंगे. कौन सी और चीजें? दिस इज अ जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टीच यू. अच्छा, ये लास्ट चीज करेंगे, उसके बाद यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक. ठीक है? तो हाँ, इसमें अब सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को अफेक्ट करते हैं. हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल चीजें, है ना? हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, या फिर हमारी वल्नरेबिलिटीज मीन्स हमारी इम्यूनिटी कैसी है. दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना? तो इफ आई एम फिजिकली नॉट वेल आई फील स्ट्रेस्ड. देन सेकेंड थिंग इज साइकोलॉजिकली, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है. टेम्परामेंट, अब मुझे गुस्सा जल्दी आता है या मुझे गुस्सा आता ही नहीं है. नाउ माय ब्रदर डजंट गेट एंग्री वेरी ऑफन, आई गेट इरिटेटेड वेरी इजीली. तो इवन आवर टेम्परामेंट डिसाइड्स. अग्रीड? है ना कि हम कितना स्ट्रेस्ड होते हैं कितना नहीं होते हैं. हमारा सेल्फ कंसेप्ट. अब ओके, somebody you know said कि what did somebody said, बहुत कुछ कहते हैं है ना. so if one of your friend you know she said something bad about you, है ना. अब हमारे सबके साथ होता है, people they backstab, है ना, पीठ पीछे कुछ ना कुछ कह देते हैं. so now it is possible कि अर्जुन कहे I don't care. नहीं, अर्जुन मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा. अर्जुन उल्टा उसके ही बैकस्टेप. इट्स पॉसिबल अर्जुन विल बी लाइक मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा. ठीक है? ओके, सो देयर इज सेकंड पर्सन मे बी गुलफ्शा. गुलफ्शा विल स्टार्ट क्राइंग, यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना. मेरी बाकी फ्रेंड्स को ऐसा बोल दिया उसने, वो तो मेरे बारे में गलत सोचने लग जाएंगे, अब मैं क्या करूँ, है ना. तो उसका स्ट्रेस ऐसा होगा, अर्जुन का स्ट्रेस होगा मुझे कि जाके अब मैं लड़ना होता बदला है कैसे कि लूं. बोला कैसे ऐसे. है ना. ठीक है, तो तीसरा पर्सन हो सकता है यार आई डोंट केयर, लोग तो बहुत कुछ चीजें कहते हैं, हु केयर्स. ठीक है? सो इवन हमारा सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, मैं अपने आप को खुद को कैसे देखती हूँ या कैसे हैंडल करती हूँ, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स हाउ विल आई रिएक्ट इन अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस. अग्रीड? Yeah. आपका Yeah, सेल्फ yeah. कंसेप्ट कैसा है? Hmm. So how strong you are, how strong you perceive yourself as, or how weak you think you are, that also affects it a lot. So even if you know sometimes the thing is कि हम ऐसे ही डरते हैं and चीजें they're not actually those that stressful or that harmful. हमारी perception से हम जो है हम dog को भी शेर समझ लेते हैं and we give that dog an importance of a lion and that's why it threatens us. It happens. By the time you'll grow in your life and you'll experience more things, you'll see कि हमने तो यार ऐसे ही, अगर मैं उसी टाइम strongly if I would have you know faced that situation, तो शायद इतना कुछ था ही नहीं, इतनी बड़ी चीज. जितनी देर तक आप चीजों से डरोगे उतना ज्यादा वो चीजें आपको डराएंगी. Once you stand up for yourself, you know how to deal with this thing and you understand कि हाँ I am not afraid of the consequences. Okay, this is a life tip, this is beyond NCERT. Okay, so you know how to deal with it and you'll not be worried anymore. तो आपका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, दैट ऑल्सो मैटर्स. फिर कल्चर तो हमने पढ़ाई, इंडिया की आंटीज और अब्रॉड की जो आंटीज है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड one might be stressful, it's possible the other might not be that stressful. Even if you see Indian culture में if you know अभी तो चलो इतना ज्यादा नहीं है, but the way people perceive girl child as a burden, as stress. But if you see abroad, then there is not that much of this thinking कि लड़की है तो it is a burden, it is a stress on parents, और लड़का है तो वो ऐसा है. अब तो situations are changing, but yeah, this is also a you know an example that you can take up for stress. Okay, I think Pooja has to leave. कौन था?
किसकी ट्यूशन थी? आई एम वेरी बैड विद नेम्स. Ma'am, Kangan. Okay. Can we complete this topic, Pooja, in 2-3 minutes? Is that possible? oh, ma'am, I'm still there in the class. Kangan has her tuitions. Okay, Gangan, can we complete this topic? Okay, fine. ठीक है, I'll just take 2 minutes. Okay, thank you. ठीक है, ओके. तो ये हमारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक थी. स्ट्रेसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एनवायरनमेंट में होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, एंड सोशल भी. सोसाइटी भी कई बार हमारे लिए स्ट्रेसर बन जाती है. You want to do something, तुम्हारी अपनी लाइफ है, you want to get married to a certain person, some boy or girl, but society क्या सोचेगी, and stresses your parents out or stresses somebody out. तो I guess you all are very well aware of this thing. फिर हमने ये भी पढ़ा कि stress is dynamic. स्ट्रेस की इंटेंसिटी एक सिचुएशन में हमारी ज्यादा हो सकती है. इट इज पॉसिबल दूसरी सिचुएशन में उतनी ही ज्यादा ना हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा रहे. बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा जितना एक्सपेक्ट करा था उतना नहीं आया. इट्स पॉसिबल एक बंदा एक दिन में ही भूल जाए, दूसरा बंदा उसको सालों तक लेता चला है. यार मैं मेहनत कर लेता तो शायद मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाते. ड्यूरेशन ऑल्सो है ना, कि आप कितनी देर तक स्ट्रेस को लिंगर ऑन करते रहते हो. And by the way, stress is a very much, it's a thing that is already there. It's possible we cannot control stress every time. अगर कंट्रोल कर पाते होते तो इतनी सारी problems that stress arises, which we already discussed like in PCOD and even in our digestive processes, तो हम कब का कंट्रोल कर चुके होते. We need good coping strategies to deal with stress. Okay, duration, intensity, complexity. Stress कितना complex है? Is it only an MST or is it like board का exam या something? UGC NET का ही exam है. And then predictability. Is the stressor predictable? जो भी चीज आपको bother कर रही है, like we discussed about uncertainty also. हमने डिस्कस करा ना कि अनसर्टेनिटी इट स्ट्रेसेस अस आउट. बट अगर हमें पता है कि चलो यार ये चीज तो एक्सपेक्टेड है कि ये होनी है इस टाइम की ड्यूरिंग और इस तरीके से होनी है, देन विल नॉट बी दैट स्ट्रेस्ड. अग्रीड? एनी डाउट स्टिल हियर? No, ma'am. Clear? Okay, good. कोई भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज आस्क. यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो. आप मेरे को मैसेज कर सकते हो. यू हैव माई नंबर, सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. अच्छा, फिर रिसोर्सेज कितने हैं? हमने रिसोर्सेज भी डिस्कस करा. प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल में डिस्कस करा ना हमने कि सेकेंडरी अप्रेजल में अगर तो मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरी पूरी एग्जाम की तैयारी हुई है, नोट्स है मेरे पास, सब कुछ है, आई विल नॉट बी वरीड. स्ट्रेस कम होगा मेरा. ठीक है, एग्जाम है, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा बट उतना नहीं होगा क्योंकि सब कुछ है. आई ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो मुझे एग्जाम के लिए चाहिए, है ना. बट अगेन एट द सेम टाइम अगर मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, it will add to my stress. तो अब ये resources कुछ भी हो सकता है. It could be the skills, it could be your IQ in the exam. अगर कोई financial problem है, like one of us said कि हाँ my parents are doing all my expenditure. अब if I have the resources, अगर मेरे पास money है तो I'll not be so much worried. इतना stress होगा ही नहीं मुझे because I'll get independent, है ना. Then social network, support network. तो okay, if there is a stressful situation and I know कि हाँ my parents are with me and they will support me in a certain thing, और I have friends, अगर वो मेरे से पंगा लेता भी है वो बंदा, तो मेरा पूरा ग्रुप जो है उसको अच्छे से बता देगा, है ना. अदरवाइज आई हैव अ फ्रेंड जो मेरा सपोर्ट देगी या क्लासमेट्स मेरा सपोर्ट देंगे, कोई बंदा सोशल सपोर्ट मुझे मिलेगा, आई विल बी काम. इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटर्मिन्स वेदर यू आर स्ट्रेस्ड और नॉट. कूल. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस स्ट्रेस अप्रेजल. ये जो नीचे 4 चीजें दी गई हैं, विल डिस्कस देम इन वेरी मच डिटेल. ओके, एंड या we will discuss that physiological behavioral. And I also wanted to ask you people, I am available on Mondays and Tuesdays also. Like I am available on Saturday and Sunday. I'm also available on Monday and Tuesday. So if you guys are okay, if you guys are free, all of you who are interested, each one of you, so we can also take up 1 hour session on Monday and Tuesday. Only 1 hour, not more than that.
आप अभी बता सकते हो इफ यू आर ओके, कल और परसों भी हम ले लें सेशन, और हम स्ट्रेस का चैप्टर, बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट इट दिस वीकेंड इटसेल्फ, बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहती थी मैं. सो Okay. इफ यू गाइज वांट वी कैन डू इट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 1 hour 6 to 7 p.m. Okay, we can. Yes, ma'am. I don't have any problem. Okay, Kangan, Pooja, are you guys good with that? Yes, Yeah. ma'am. ठीक है, so we will meet tomorrow then 6 p.m. हम आगे स्ट्रेस को कंप्लीट कर लेंगे. Okay. Ma'am, could you do me a And favor? yes, sure. Like आपने बोला ना that you will be sending dates of psychologists from class 11th book. So like मेरे को तो सिर्फ Yes. 12th का चाहिए, तो can you separate, मतलब like 12th का अलग से भेज सकते हो? अच्छा, आपको सिर्फ 12th का चाहिए. Because Okay, I'm I'll 12th. mention the class on it कि ये 11th grade का है, ये 12th grade का है, but ultimately आपको सब कुछ ही चाहिए, even if you'll be sitting for your entrances. तो try to learn that also. I'll send of 12th also. Okay, no problem. Suits you? Okay. And please do come in tomorrow's class. We have a group of 20 people, 20 plus people, but the strength is only 6 to 7. And it feels good when you have an interactive audience, isn't it? Yeah. I'll stop sharing. Hannah? And yeah, so I expect all of you to return to